Okay, guys, let's start. So is it clear what am I trying to say here? Are you able to hear me clearly, see my screen? Yes. Yes. Okay. I'm not able to see your screen. What about others? Are you able to see my screen? I'll Yes. try to reconnect. Okay, yeah, try doing that. Yes, guys, meanwhile, is it clear what I'm trying to say here? That if you use class A, then यहाँ पर इतने सारे IPs को आप waste कर रहे हो. Waste as in you won't be able to you won't be able to use them in some other range. Is it clear, guys? Yes. So to avoid that, then now we have classless IP, CIDR. Classless में क्या होता है कि इसी range को you could use here in one department and you won't have to use complete. Class में क्या होता है, आपने class A use कर लिया ना, तो पूरे के पूरे still same. So what do you see, Miranda? Do you see a black screen or you don't see it at all? No, actually, I can see that now. Now it is. It's appearing now? Okay. Yeah, Great. yeah. Okay. Oh, thank you. Right. So guys, I was saying कि यहाँ पर क्लास A में आप लोगों ने एक बार क्लास A यूज कर लिया ना, तो कंप्लीट क्लास यू विल हैव टू यूज ऑन दिस डिपार्टमेंट, एंड इफ यू यूज इट ऑन सम अदर डिपार्टमेंट, वो दोनों मर्ज हो जाएंगे. एज इन कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं. आप नाम उनको अलग अलग दे दो, कुछ भी दे दो, बट इफ यू आर यूजिंग 10 का रेंज यहाँ पर और यहाँ पर यू सी के बहुत रेंज बाकी है, ओके लेट्स यूज 10 वाला रेंज यहाँ पर, सो ये दोनों में कनेक्टिविटी बाय डिफॉल्ट स्टैब्लिश हो जाएगी. ठीक है. There are other methods and other ways to block them, but we do not want to do that. So to avoid this situation, now what do we have? We have CIDR, that is classless interdomain routing. CIDR में क्या होता है ना कि you could use class A के IP address, जितना भी रेंज आपको चाहिए उतना ही रेंज आप यूज कर सकते हो. लेट्स से दैट इसका पूरा 10 का रेंज है, एंड इफ यू डिसाइड कि नहीं मुझको बहुत लिमिटेड रेंज यहाँ पर यूज करना है, ओनली 255 IPs यहाँ पर यूज करना है इसमें, यू कुड डू दैट, एंड रिमेनिंग यू कुड यूज समवेयर एल्स. हाउ डू वी डू दैट, विल सी, उसको हम देखते हैं. बट आर यू गाइस गेटिंग द कॉन्सेप्ट के साइडर क्या है? Where you could divide your private network. पब्लिक की तो अभी डिस्कशन ही नहीं चल रहा है. ठीक है, पब्लिक में कोई है ही नहीं. पब्लिक में एक आईपी कहीं और यूज ही नहीं हो सकता है, तो पब्लिक का कोई डिस्कशन ही नहीं. जितना डिस्कशन हम कर रहे हैं सब कुछ प्राइवेट आईपी को लेकर ही कर रहे हैं. प्राइवेट नेटवर्क एंड प्राइवेट आईपी को ही लेकर कर रहे हैं. सो साइडर में इट विल हेल्प यू टू डिवाइड दैट नेटवर्क, सेम नेटवर्क, इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. इज इट क्लियर गाइस? Yes. Okay, so now before we understand CIDR और उसका formula वगैरह, let me go to portal and let me create few virtual machines for you guys. तो आप लोगों को थोड़ा portal देखना भी हो जाएगा, and then we can, once you have a look at that, थोड़ा सा समझना भी easy हो जाएगा आप लोगों के लिए. Just let me stop this machine because I'm not using it. Guys, please make sure that whenever you create a resource or anything, delete it completely. I'm not deleting this because I keep using this for practices, but if you create anything and if a practical is done, if you do not have any other practical on that machine, make sure you delete it completely. You go to resource group and then you delete it completely. And not only virtual machine, with virtual machine an IP gets created, you'll have to delete that. When network security group get sorry, it gets created, you'll have to delete that. What is it, we'll discuss later, but make sure you delete all of this. Network interface card delete बनता है, उसको delete करना है. Hard disk एक बनती है, उसको delete करना है. You'll have to delete everything. So it's better when you come here, select all, delete, type yes, click apply. That's it. Okay, now let's go to this
portal. Sorry guys. It's taking a minute break for a minute. I'll be back. Sorry guys, thank you for your patience. Okay, so let's quickly start creating a virtual machine here. Or anyone who wants to do that, and I can guide them. All of you who have access here. Yogesh, Wasim, Vikas, Hanti, Aki, Badnan. Yes, guys. Any one of these guys who are present have a laptop and want to create a virtual machine, or do you guys want me to create first and then you'll practice? You can create first then. Okay, so let's start creating one virtual machine. First, I'll create a resource group. You guys all already have your resource groups here. जिनके पास नहीं है, who want to practice, जिसको भी करना है, let me know. We'll create one. So to create few things, there are plenty of options we have in Azure. And it's not only for Azure, Microsoft का कोई भी product आप ले लो, एक चीज करने के multiple options होंगे वहां पर. So either I can come to my resource group and click here on create, and I can select virtual machine. This is one option. Create resource, I can click here. It will again take me to virtual machine, or I can simply go to home, click on virtual machines. Existing virtual machine will appear here. As there are none, so I don't see anything here. You create, you click on virtual machine, and later it will give you an option to select your resource group. And if you don't have an access, let's say Hente is trying, he has read-only access on his resource group, but by default, for some reason or by mistake or intentionally, he selects Adnan's resource group, he won't be able to create it. So you can't do that blunder. It will give you an error that you don't have access on this resource group. So you'll have to select your main resource group wherever you have access. So these are the options using portal. What else option do we have to create a virtual machine? PowerShell. Sorry, yes, PowerShell, right. So we could use PowerShell from here. Yes, that's correct, PowerShell from here. Or
फ्रॉम हियर फ्रॉम माय लोकल पावरशेल, और इसको बस कनेक्ट करना होगा आप लोगों को आपके पोर्टल से. सो यू कुड यूज एनीथिंग, बोथ आर सेम. I'll just have to type here easy login. I hope you guys are getting the difference. Okay, and I the moment I click there, see, this is how it asks me to log in. It's done. I'm logged in now. I hope you guys are getting the difference. This is my physical machines PowerShell. मेरे कंप्यूटर का PowerShell है जिस पे क्लिक करके मैंने लॉग इन किया है Azure पोर्टल पे. ठीक है, सी नाउ आई एम लॉग्ड इन. एंड ये PowerShell है जो पोर्टल में लॉग इन करने के बाद मैंने ओपन किया है. बट बोथ विल वर्क इन अ सेम वे. Is it clear till here, guys? Yes. Okay. So now to create a virtual machine, we could use PowerShell or we could use portal. As we did last time for our resource groups, first I'll show you how to create a virtual machine using portal, because you will understand कि ये सब क्या है. What do you mean by location? मैं location बोल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है? And then we'll try creating one using PowerShell. So I click on home, I click on virtual machine, or I can click create here also. Click on virtual machine. This is my subscription. Now I only have one subscription. People who have access in my subscription, they will see in my tenant, they will see multiple subscriptions. They will make sure you select the correct one. Resource group, make sure you select your own resource group. कोई और select करोगे तो error आ जाएगा, बाद में होगा ही नहीं. What is the name of my virtual machine? Naming convention एक document होता है. I'll share it with you guys. हर company का अपना अपना होता है, but just to get an idea, I'll share a document with you. Normally कैसा होता है जैसे कोई कंपनी का नाम होगा या एप्लीकेशन का नाम होगा, उसके आगे कोई नंबर होगा, देन विंडोज है या लिनक्स है, उस तरह का कोई नाम होगा. हर एक का अपना अपना होता है. सो यू डोंट इवन हैव टू फॉलो दैट. बट इफ यू आर प्लानिंग टू शो दैट यू हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन एन एनवायरनमेंट, तो एक आइडिया होना इट्स नॉट अ बैड थिंग. तो कैसे हो सकता है? लेट्स से दैट आई एम वर्किंग फॉर एग्जाम्पल mdocs. सो mdocs अपनी कंपनी का ऐसे रखेगा, या फिर उसका कोई क्लाइंट होगा. एग्जाम्पल के mdocs का क्लाइंट है वोडाफोन. सो फर्स्ट दे विल कीप 3 letters. Not necessary, ठीक है, ऐसा कोई set standard नहीं है. I'm just giving you an example. You can come up with your own. और यहाँ पर Azure का तो कोई requirement नहीं, आप ये कुछ भी नाम दे दो, ये भी चल जाएगा. Doesn't matter. ठीक है, but I will suggest क्या you follow these steps. ऐसे इन चीजों को, naming convention वगैरह को follow करो तो it becomes easier for you to present these details in an interview. So if let's say it's a Vodafone's application, so first name will be Vodafone. देन कहाँ का एप्लीकेशन है? लेट्स से यूएस का एप्लीकेशन है, सो मे बी लोकेशन दे विल कीप यूएस. और या उसमें भी डिटेल में रखना होता है उनका, तो न्यूयॉर्क सिटी का है प्रॉपरली, कोई डेटा सेंटर या कोई इस तरह से. किस तरह का एप्लीकेशन है? फाइनेंस एप्लीकेशन है, क्या एप्लीकेशन है? कस्टमर रिटेंशन वाला एप्लीकेशन है, कस्टमर सर्विस वाला एप्लीकेशन है. सो लेट्स से सी साइट का कोई एप्लीकेशन, मैं इस सर्वर में सी साइट वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करने वाला हूँ. सो आई नेम इट सी साइट. अब इस पर्टिकुलर सी सेट एप्लीकेशन के लिए मेरे पास प्लेंटी ऑफ सर्वर्स ऑलरेडी है. सो जो भी लास्ट नंबर होगा, लेट्स से आई हैव ऑलरेडी 300 सर्वर्स, सो दिस इज 301. बट इन आवर केस this is first server, so I'll type 001. Is it going to be Windows or Linux? If it is Linux, I'll type L. If it is Windows, I'll type W. ये सब आपको बाद में जब मॉनिटरिंग वगैरह करते हो ना, तब काफी काम में आता है. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज माय ओन एग्जांपल. आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, डजंट मैटर. ठीक है, सो दिस इज माय मशीन्स नेम. नाउ रीजन का क्या मतलब होता है? विल सी दिस. आई थिंक कल वाले सेशन में मैं पूरा इसका रीजन वगैरह जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. एज ऑफ नाउ आई एम टेकिंग ईस्ट यूएस. अवेलेबिलिटी सेट विल सी लेटर. यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कौन सी मशीन हम लोगों को चाहिए. तो आई एम प्लानिंग टू गेट विंडोज सर्वर 2022. दीज आर द सर्वर एडिशंस. ओके, आई होप यू गाइस नो दिस. ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, we have already discussed this. So as of now I'm taking server 2022. Size, what do you mean by size? Size define करता है कि आप लोगों को ये कितना चाहिए, वर्चुअल मशीन का रैम कितना चाहिए, उसका हार्ड डिस्क कितना चाहिए, ये सब जो है वो साइज डिसाइड करता है. ठीक है, सो लेट मी सेलेक्ट वन साइज. आई थिंक आई हैव टू चेंज दिस. फ्री टियर में काफी इश्यूज होते हैं, बहुत लिमिटेड चीजें आपके लिए फ्री है. सो मेक श्योर यू सेलेक्ट अकॉर्डिंगली. ये देखो, ये सारे साइजेस अवेलेबल नहीं है फ्री टियर में.
But are you guys getting it? Region नहीं समझ में आ रहा है, that is fine. Name I explained. Image, यहाँ पर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को चाहिए वो इतने ही नहीं है. If you want to see the complete library, you click on images. ये सारे आपके पास अवेलेबल. You could to take anything. Windows Server 10, Ubuntu, Windows 7, Ubuntu, CentOS, Linux, Red Hat, Debian, ये सारे के सारे आपके पास अवेलेबल है. And there are plenty of these. If you see, यहाँ पर 1500 है, यहाँ पर 900 है. आपको कोई ऐसा चाहिए कि जिसमें ऑलरेडी वेबसाइट वगैरह चलने के लिए रेडी हो सर्वर, सो यू कुड टेक वन ऑफ दिस फ्रॉम हियर. ये सब हम धीरे धीरे सीखेंगे. I mean, you don't have to learn all of this, you just have to learn the concept. ठीक है, but as of now we are happy with this. Sizes I explained कि साइज में क्या है. साइज में आप लोगों को बस ये करना है कि आपका रैम क्या होगा. द मशीन विच आई एम ट्राइंग टू टेक नाउ, इसका 8 GB रैम होगा और एक CPU होगा, इसमें एक वर्चुअल CPU होगा. Now I hope you guys are clear with this. What do you mean by virtual CPU? ये हमने तभी देखा था जब मैंने आप लोगों को initially physical server और virtual server के बीच के examples explain किए थे. So who could explain that what is a virtual server, what is a virtual CPU is? Yes guys, what is a virtual CPU is? Virtual CPU includes cores, for example, the physical CPU and the processor is of 16 core. Then the dividation of its core can be counted in virtual CPU. Right, renting CPU from cloud. Not exactly. Yes, sort of correct. Not exactly renting CPU from cloud. That is fine. We are renting everything. But what do you exactly mean by virtual CPU? See, let me explain it very quickly again before we proceed. I explained you कि physical servers कैसे होते हैं. We'll see this once again. Be it cloud or be it your on-premises, concept same रहने वाला है. This is your physical server, जिसके ऊपर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे और ये आपका पूरा का पूरा सर्वर बन जाएगा. But the another method is you could use virtualization. Virtualization में क्या करते हो, इसके ऊपर आप एक virtualization का लेयर इंस्टॉल कर देते हो, जिसके बाद आप इसको वर्चुअल मशीन्स यूज कर सकते हो, मल्टीपल मशीन्स यूज कर सकते हो उसके ऊपर. अगर ये वर्चुअलाइजेशन लेयर ना हो तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो सकता है. यहाँ पर plenty of virtual machines यूज हो सकते हैं, पर plenty of operating systems यूज हो सकते हैं. ठीक है. So if this one has 8 CPUs, किसी भी वर्चुअल सर्वर में हार्डवेयर में CPUs होते हैं. ठीक है, 8 CPUs and 12 GB रैम, और इसके ऊपर मैं अगर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा तो पूरा का पूरा 12 GB रैम और 8 CPU इसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, एक ही OS पे यूज हो जाएगा. बट व्हेन आई एम सेइंग वर्चुअलाइजेशन, सो यहाँ पर जो 8 CPU है, इसमें से मैं जितने रेंट पे ले रहा हूँ, ये 8 है और 4 मशीन है. आई कैन डिवाइड इक्वली 2 ईच, और आई कुड हैव 1 हियर, 3 हियर, 1 हियर एंड रिमेनिंग 3 हियर. 3 3 6 और 2 8, इस तरह से भी डिवाइड कर सकता हूँ. और 2 ईच किसी भी तरह से मैं डिवाइड कर सकता हूँ. सो ये जो डिवाइडेशन है, इस 8 CPU में से मैंने इस मशीन को जो है एक CPU असाइन किया है. सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल CPU. इज इट क्लियर गाइस? कुछ कंफ्यूजन है तो लेट मी नो. This we have already covered when we were discussing our virtualization वाला topic. कोई किसी को याद नहीं आ रहा, so go back and watch that video once. Same happens with RAM. यहाँ पर अगर 64 GB का RAM है, I can divide it equally. इस RAM को इन सब में equally divide कर सकता हूँ. यहाँ पर मैं 4 GB दे सकता हूँ, यहाँ पर 4 GB, यहाँ पर 4 GB, 12 GB यूज हो गया, और रिमेनिंग पूरा का पूरा 58 56 जितना भी है 50 GB में यहाँ पर दे सकता हूँ. For this virtual machine, I could do that. So be it cloud or be it your own on-premises data center, सेम ही चीज है. क्लाउड में भी क्या कर रखा है, अज्योर ने इसी तरह का कोई मशीन लगा रखा है, या तो डेल का होगा, HP का होगा, सिस्को का होगा. बट अल्टीमेटली देयर इज अ हार्डवेयर. ऑन प्रीमाइसेस में क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस.
कि इसका कोई रैम खराब होता है तो क्या इसका फैन खराब होता है तो क्या इसकी वारंटी। क्लाउड में क्या किया है, इसकी जिम्मेदारी क्लाउड ने ले ली है। सो बी इट क्लाउड और योर ऑन प्रीमाइसेस, कॉन्सेप्ट्स आर सेम। इज इट क्लियर गाइस? सी ये है डेटा सेंटर रैक, इसमें इस तरह से सर्वर्स लगे होते हैं, ये सर्वर्स इसमें लगे होते हैं। तो ये आपका डेटा सेंटर हो या ये Azure का डेटा सेंटर हो, सर्वर्स उसी तरह से होने वाले, उसी तरह से वो डिवाइड होने वाले हैं। So I hope it is clear. So when I say virtual machine, virtual CPU 1, it means कि ये Azure के किसी ऐसे रैक पे, किसी ऐसे सर्वर पे जाएगा जहां से मुझको वो एक वर्चुअल CPU दे सकता है। ठीक है, कोई हार्डवेयर ऐसा होगा जिसमें से मिनिमम 2 के लिए डिवाइड कर रखा है इन्होंने, बट आई वांट 1, सो इट्स ओके, ओनली 1, आई एम टेकिंग 1। नाउ माय क्वेश्चन इज कि लेट्स से ये Azure के किसी ऐसे सर्वर पे चला गया जहां पर 8 वर्चुअल CPUs थे, इसमें से एक इसने यूज कर लिया, and now other people can also use that physical server to have their virtual machine on that server. So what kind of cloud service are we using? Public cloud. Exactly, public, right? Because I'm sharing that host, I'm sharing that hardware. और अगर प्राइवेट होता तो वो मुझको पहले ही सिलेक्ट करना पड़ता, प्राइवेट होता तो उसमें से मैं अगर एक भी यूज कर रहा तो no one else could use the remaining CPUs. ठीक है, then here we'll select a username, could be anything, then we'll select a password. पासवर्ड का एक क्राइटेरिया होता है उनका, so make sure that you meet that, otherwise यहीं पे कई एरर आते होंगे। This I'll explain it to you later. ये भी हम बाद में देखते हैं। वर्चुअल मशीन का पूरा टॉपिक हम डिटेल में देखने वाले। ओके, नाउ हियर लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्किंग। Which class is it? Class A private. Exactly, it's a class A in private range. Now this is CIDR, ये जो /24 लिखा है ना, इसका मतलब होता है CIDR. Now let's see, इसको हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। So what does it say? 10.0.0.0 और 16/16 दिया है। अगर मैं 16 नहीं देता तो कितने आईपी एड्रेस यूज कर सकता हूं मैं? 16 million. Yes, 16 million. But Azure is something जहां पे without CIDR आप यूज ही नहीं कर सकते हो। See, if I try to give an IP address without CIDR, वो यूज ही नहीं होगा। So CIDR आप लोगों को देना ही होगा। ठीक है, लेट मी शो इट टू यू कि अगर आप if you see the number of IP, forget the error message, okay? Number of IP addresses which are changing. If I use 1, look at the number of IP addresses which we get. If I use 25, look at the number of IP addresses which we get. Any wild guess which could be the maximum number I could use here? What could be that number? This is representing the bits of IPs. This number is representing the usable bits 32. of IPs. Exactly. Why 32? In IPv4, 32-bit is the maximum, right? Right. Our IPv4 is our 32-bit IP address. So if I use 32 here, I'll get only one address. 33, it won't take. See, it has to be between 1 and 32. Why 32? Because IPv4 is a 32-bit IP address. So let's say I'm using here 25. Now I'm using class A IP address. With the help of CIDR, what I'm doing, I'm taking only 128 addresses. तो इसके आगे का जो remaining IP addresses है ना, वो बचा हुआ है, I could use it for some other department. ठीक है, then we have subnet.
We'll discuss this. What is a virtual network? What is a VNet and subnet? We'll discuss that. If you are not getting it, that's completely fine. I just want to create a virtual machine for you guys, hence I'm doing this. Now, out of this 128, I'm using 63 for one network. I could have another network also. Sorry. Okay. So as of now, we are using this one. Will do in detail. Don't worry. ये अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है. So that is completely fine. As of now, I just want to create a virtual machine for you and show it to you guys. इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि साइडर कैसा है, उसमें सबनेट क्या है, how many subnets could we have, वो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. So don't bother about it now if you're not getting it. What is NIC, by the way? NIC, not NIC security group. What is NIC? Anyone has any idea what is a NIC? Network interface card. Sorry. Yes, network interface card. Why do we use that? Yes, guys, why do we use that network interface card? Network interface card is something where you apply your IP. जितने IPs की हम बात कर रहे हैं ना, हमारे लैपटॉप पे एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है और उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे ही हम लोग IPs यूज कर सकते हैं. So these many network interface cards I have in my laptop. This one is connected as of now. This is my Wi-Fi. It is connected using Wi-Fi. And if I see the details, this is my network interface card. A network interface card is a hardware which we can connect to our laptop or server, through which we can have an IP and then we can communicate. But in virtual machine, obviously we will not require a hardware. तो वहां पर एक NIC लग जाएगा जो obviously virtual होगा. ठीक है, so that is what it is. Forget this. ये सब हम डिटेल में देखेंगे when we start our virtual machine वाला topic. Tags, that's fine. We'll see it later. Basic topic है एकदम. This is showing you that how much you'll be spending hourly. And I click on create. And my virtual machine is being created. Remember guys, इसके पहले हमारे 2-3 टॉपिक्स पेंडिंग है. ये वर्चुअल नेटवर्किंग आप लोगों को अच्छे से बताना है, साइडर बताना है, रीजन्स वगैरह बताना है, and then we'll start with virtual machines. Today I want to show it to you guys, so at least you guys go and create your own virtual machines. उससे पहले अदरवाइज हम लोगों को नेटवर्क और साइडर जो है ये सीखना है एक बार, and then we'll also cover these basics of Azure. कि इस Azure के बेसिक्स में जैसे Azure रीजन क्या है, then Azure paid region क्या है, कुछ बेसिक चीज एकदम. What is Azure geography, what is Azure region, बेसिक चीज है वो कवर करेंगे, and then we'll start with our virtual machine का जो लेफ्ट में पूरा ये आता है. Let me show it to you. This is the biggest topic we will have. Sorry about the background noise guys, there's some work going on in society. मेजोरिटी टाइम हम लोगों का इसी टॉपिक पे लगने वाला है, बिकॉज इट इज अ ह्यूज टॉपिक और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड और मोस्टली आस्क्ड. वर्चुअल मशीन ही ज्यादा यूज करने वाली चीजें हैं. So these all options we will see one by one for virtual machine. सबके लिए नहीं देखेंगे हम, वैसे इसमें काफी चीजें रिपीटेटिव है. ओवरव्यू सब में होगा, एक्टिविटी लॉग सब में होगा, IAM we have already seen सब में होता है, टैग सब में होगा, डायग्नोस सब में होगा. So this is common for everything. In virtual machine specifically we'll see networking. Connect is the most important topic. ये देख लेंगे, disk size, security, recommendation, ये सब हम लोग देखेंगे. Then Bastion, this is very crucial topic, high level topics है, backup and disaster recovery and auto shutdown, basic है ये. ठीक है.
Then monitoring सबके लिए common है. Monitoring सबसे last में एक बार common चीज देखेंगे हम लोग. Then yes, this is also troubleshooting. This is very crucial for people who are applying for administrator. बहुत सारे questions यहाँ से आने वाले. So we'll see this one by one, but that we will see post completion are cider वगैरह और यहाँ पर कुछ topics से खत्म करने के बाद. So maybe by end of this week we'll start from these topics. But I'm showing you to create a virtual machine, so at least you guys go and create your machine. Try to log into that machine and delete that machine. So this is how it looks once your virtual machine is ready. Now, if you have to take a remote, you can take a remote. Which IP should I be using to take remote? Who can answer this? Public. The Why public? Why not private? private is just for that separate space. We cannot access it as you know. Yes, guys. What about others? Which one should I use? For remote private IP address, And why private? because without private IP address, we will not be able to take the remote access. Okay. Anyone else? Private, public, and why? I hope you understand when I say taking remote, it means communication, right? That means two IPs will communicate with each other. From where will I take the remote of this computer? First thing, I'm planning to take remote from my computer. This is my computer, fine. This is my own computer. I'll show you my IP address. My IP address is 192.168.108. Which class and public or private? C. This is private. Okay. Which class? C. Class C. Sorry, Class C. class C, right? Class C. Right. Okay. Sorry. Now, will I be able to communicate with these two IPs directly? No. No, right? And netting will not happen. RDP वाले इस फिलहाल इसमें netting नहीं होगा. क्यों? What are things which we require for netting? Router. So I have router at my place for sure. Do we have router in our Azure environment? Virtual router? No. So what other option do I have now to take remote? I have public IP. But can my private IP and this public IP can communicate directly? ये मेरा 192 इससे बात कर सकता है क्या directly? Yes, guys. Can I talk to 20.119.203.241 from this 192.168.1.108? Guys, are you getting it? Are you guys getting confused? Isaac bhai, Juhi, Miranda, Shweta, Sumaya, are you guys getting it? It will not contact directly. Yes. But will I be able to take remote? Now, if I try to take remote of this IP using my machine, will I be able to take remote or no? If I take the IP, if I take the remote now using this IP, will I be able to connect or no? Yes, you'll be And how? able to. Because I have private IP. This is public IP. How will I be able to connect or communicate? Who could tell me the method? The request will go through your private IP to your router where the physical IP is being configured. The public IP is being configured, and that will communicate Perfect, with this perfect. IP. Sorry to interrupt you guys. We have only 4 minutes. Yes, your answer is correct. Hence, I interrupted. So I will be able to take remote because while taking remote, my
private IP will not be presented to that remote, to that machine. Which IP will be presented? My public IP. This is my public IP. So now this 103.275.120.166, this will communicate. This IP is going to communicate with this 20.199. And do we have to check range or anything for this for public IP? Are these in different class or same class? Same class. Same class. What if it had a different class? Will they be able to talk to each other? Public IP I'm talking about. Yes. Yes, public IP can talk to each other irrespective of the class because they are over the internet and they cannot be repeated. Now, because I have 103.275.166, no one will have this IP address. My machine, this 20.119.203, no one will have this IP address as of now. जब तक मेरे मशीन पे असाइन है किसी और को नहीं मिल सकता है. Why? Because I told you internet भी अपने आप में एक बहुत बड़ा network है. That is one network. So now let's try taking remote. Click on connect. Click on my username, the password. So this is how you can create one virtual machine. You can try taking remote. उसके आगे कल हम लोग ये देखेंगे cider, and hopefully if time permits we'll see Azure subscription and region, वो सब भी हम लोग देखते हैं regions वगैरह थोड़ा detail में. And then we'll start with virtual machine के जो left वाला panel है उसमें जितने options है we'll start looking at these options one by one in detail. उसमें ये सब वैसे ही कवर हो जाएगा. What is region, ये हमने क्यों select किया, क्या कैसे select किया था, everything will be covered. But this is how it looks. Now you can log into your server and do whatever you want. You want to host a website, you can do that. This is how simple it is. Okay, so we're about to finish our session. Sorry, what was that? Tomorrow there's a class. We could, it's up to you guys. I am okay to take it if you guys want to celebrate Eid and you want to observe a leave for tomorrow, we could take a leave. That's okay. If majority people are not attending, then we'll have to take a leave. Yeah, because I won't be able to attend. Okay, we'll take a leave. Don't worry. Then we'll see you guys on Wednesday, day after tomorrow. But this is how, make sure in these 2 days leave, I understand Eid hai, sabko celebrate वगैरह करना होगा. But at least go once, read that IP address ka range, go once, try to create one virtual machine. If you face any problem, ping me, ping in the group, people will help you. But try to create one virtual machine. Try to log in with that virtual machine. Okay, I'll close this now and I'll show you how to delete it also. So you can delete it. So this is my temp folder. I'll come to my resource group, select all of them, click delete, select this, type yes and delete. And make sure you see this, that this has been done. It will take time. Okay. Okay guys, and see you on Wednesday. थोड़ा सा revision कर लो. On Wednesday we'll start with networking again. Okay guys, bye. Bye.